Hello student, welcome again in your English class. I am Rekha Verma from New Catholic Mission School, Jhabua. Children, today we are going on English Bridge Semester 2, lesson number 6. Lesson number 6, the kite. Children, have you ever wondered how the world looks from top? Unscramble the words and identify the pictures. आपको ये वर्ड अनस्क्रैम्बल करके यहाँ इनके नेम्स लिखना है. माउंटेन, हियर रिवर एंड हियर सिटी. माउंटेन्स, रिवर, सिटी. Did you ever have a chance to look at such places from the top? If so, what did you see and from where? Children, क्या आपने इन प्लेसेस को कभी ऐसे टॉप से ऊपर से देखा है? और अगर देखा है तो आपने क्या क्या देखा और कैसा फील किया है? और आज की हमारी पोयम काइट भी इसी टाइप से है कि जो पोएट है वो सोचते हैं काइट कि जैसे फ्लाई करती है तो वो ये सोचते हैं कि मैं भी काइट के जैसे फ्लाई करूं और काइट जैसे इधर उधर घूमती है मैं भी इस टाइप से ऊपर आसमान में घूमूं. In this poem, the poet Frank Dempster Sherman wishes to become a kite and travel to many places. Let's read and find out where all he wishes to travel. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whatever way I chance to blow. Then I could look beyond the town and see the river winding down and follow all the ships that sail like me before the merry gale, until at last with them I came to same place with a foreign name. Children, here words meaning breeze, a gentle wind, chanced to do something without planning. Merry, happy, gale, a very strong wind, foreign, unfamiliar or strange. Now I explain this poem. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. पोएट की क्या इच्छा है कि वो काइट के ऊपर बैठे या काइट जैसा बन के ऊपर आसमान में सैर करे. एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो वॉट एवर वे आई चांस टू ब्लो. और अपॉन राइड हवा के ऊपर बैठकर वो जहाँ भी उसका मन हो चला जाए. और वॉट एवर वे आई चांस टू ब्लो. और चांस मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कहीं भी जहाँ हवा चलती है उसके साथ वो चला जाए. देन आई कुड लुक बियॉन्ड द टाउन एंड सी द रिवर वाइंडिंग डाउन. और फिर वो ऊपर से क्या देखेगा? टाउन, गांव जो भी दिखाई देंगे और रिवर. एंड फॉलो एट द शिप्स दैट सेल लाइक मी बिफोर द मेरी गेल. और जो शिप है जो सेल करे मैं उनके साथ साथ भी बहता चलूं, उड़ता चलूं. until at last with them I came to some place with a foreign name. और लास्ट में मैं ऐसी जगह चला जाऊं जो मैं नहीं जानता हूं या मैं कभी गया नहीं, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है. काइट भी आपने भी सबने काइट उड़ाई है. काइट के जिधर हम देखते हैं काइट कहीं भी हवा में लहराती, तो पोएट की भी यही इच्छा है कि वो भी काइट के जैसा ही आसमान में फ्लाई करे. नाउ एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन.
Lesson number 6, the kite. Question number 1, mark the sentences as true T or false F. Number 1, the poet wants to ride upon the breeze. Yes, वो हवा के ऊपर बैठकर जाना चाहता. So we write here true T. Number 2, the poet wants to look beyond the sailing ships. No, false. कहाँ? Beyond the town था. So we write here F. Number 3, the poet is afraid to travel to unknown places. क्या poet को डर लगता है? नहीं. So we write here F. Number 4, in the end the poet wants to get back home. End में क्या? पोएट अपने घर जाना चाहता है? नहीं, वो कहाँ जाना चाहता है? फॉरेन प्लेस पे जो वो नहीं जानता. सो वी राइट हियर F. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाट डज द पोएट विश टू बी? आंसर, द पोएट विशेस टू बी अ काइट अप इन द स्काई. Number 2, name 3 things that the poet would see from the top. Answer, the poet would see the town, the river and the ships from the top. Children, I hope you enjoy this poem and you also understood exercise of this poem. Now, today we start our grammar lesson. Lesson number 14, doing words. So children, open your grammar book and open your lesson number 14, doing words. Children, what do you mean by doing words? Doing words means action words. Words that tell us what a person or thing is doing. So let's start. Find these doing words in the word grid and circle them. Here, back, hope, think, bend, jump, come, cry, fall, walk. ये वर्ड आपको इस ग्रिड में ढूंढकर सर्कल बनाना. हियर बैक, B-A-K-E, back. So you make circle on here. Now hope, H-O-P, hope. So you make on circle. Think, T-H-I-N-K, think. Next, bend, B-E-N-D, bend. Jump, J-U-M-P, jump. Come, C-O-M-E, come. C-R-Y, cry. C-R-Y, cry. Fall, F-A-L-L, fall. Walk, W-A-L-K, walk. Children, all these words are doing words. Read the sentences. Gauri plays the piano. Arushi goes to school in the morning. I eat breakfast at 7 o'clock. They walk in the park. Here, plays, goes, eat and walk are doing words. Some words tell us what a person or things does. They are doing words. Doing words means action word. वे सभी वर्ड एक्शन जो हम करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स. सो वर्ड्स टेल अस what a person or thing is doing is called doing words. Now
exercise of this lesson. And children, you also remember all sentences have doing words. सभी सेंटेंस में डूइंग वर्ड्स होते हैं. नंबर 1 ए, एक्सरसाइज ए, look at the pictures, fill in the blanks with the correct doing words to complete the sentences. Number 1, here rabbit. The rabbit eats a carrot. What does do the rabbit? The rabbit eats a carrot. Here eats doing word. Number 2, Priya runs in the park. Here in this sentence, runs is doing word. Number 3, the boat sails on the sea. Here in this sentence, sails is doing words. Number 4, it rains every day. Here rains is doing word. The cat sleeps on the pillow. In this sentence, sleeps is doing words. Now, B, underline the doing words in the sentences. अब आपको यहाँ जो भी डूइंग वर्ड्स है यहाँ पर अंडरलाइन करना. नंबर 1, मिस प्रिया टीच अस इंग्लिश. हियर टीच इज डूइंग वर्ड. Number 2, we swim in the pool. Here swim is doing words. Number 3, the man blows the horn. Here blows is doing word. Number 4, Ishan drives the school bus. Here drives is doing words. Number 5, the baby crawls on the floor. Here crawls is doing word. Number 6, the dog plays with her puppies. Here plays is doing words. Number 7, Meera draws a house. Here draws is doing word. Number 8, the policeman chases the thief. Here chases is doing word. C, fill in the blanks with the doing words in the box. Here crawls, talk, sit, moves, give, cooks, walks, throw are doing words. So complete this sentence. Number 1, don't throw stones at animals. Number 2, a train moves on rails. Number 3, people sit on benches. Number 4, Rahul cooks dinner on Sunday. Number 5, Neetu walks down the stairs. Number 6, Kanav and Vijay talk to each other daily. Number 7, the snail crawls out of its hole. Number 8, please give me the ball. Children, all these words are doing words. Throw, moves, sit, cooks, walks, talk, crawls, give are doing words. I hope you understood doing word. What is doing word? Words tell us what a person or thing is doing is called doing word or action words. So children, ये आपको आपकी ग्रामर बुक में फिल करना है, कंप्लीट करना. एंड आई होप यू हैड डन completed your previous work in your grammar book and notebook. ओके, और आपको घर पे ही रहना है, सेफ रहना और अपना वर्क कंप्लीट करना है. एंड रीडिंग भी आपको करना है, रीडिंग की भी प्रैक्टिस करना है. ओके, थैंक यू.